हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीएल शर्मा, मैथ सर, डिस्कसिंग एक्सरसाइज 4.1 and exercise 4.2 of chapter number 4, that is linear equations in two variable of class 9 mathematics. So here is question number 1 on your screen. The cost of a notebook is twice the cost of a pen. Write a linear equation in two variable to represent this statement. We read the question carefully. इसमें given है कि the cost of notebook है वो एक पेन की cost का double है. So what is given here? That the cost of a notebook is equal to 2 times the cost of a pen. It is given. So we consider, let the cost of a notebook is rupees X and the cost of the notebook pen be rupees Y. So we can write X is equal to 2I, or we can write X minus 2Y is equal to 0. And this is our equation, that is linear equation in two variables. So this is the answer of this question. ये इस question का answer है. Now we move on to the question number 2. Express the following linear equations in the form ax plus by plus c is equal to 0 and indicate the values of a, b and c in each case. इस क्वेश्चन में ये आपको लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल गिवन है, लेकिन इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और उसके बाद में वी हैव टू आइडेंटिफाई, हमें पता लगाना है द वैल्यू ऑफ ए, द वैल्यू ऑफ बी एंड द वैल्यू ऑफ सी. Value of A means coefficient of X, value of B means coefficient of Y, and value of C means the constant term. तो पहले हमें इन सबको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा. देखिए, फर्स्ट इज राइटिंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स 2x plus 3y minus 9.35 bar is equal to 0. ऑल द टर्म्स को हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं. एंड नाउ कंपेयरिंग इट, इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, और हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 से. देखिएगा यस, तो जब कंपेयर करेंगे, देखिए x की जगह x है, तो इन प्लेस ऑफ a इट विल बी 2. सो वी कैन राइट हियर इन प्लेस ऑफ a वी कैन राइट 2. सी हियर in place of y it is y, so in place of b that is plus 3, so b is equal to 3. And see here in the constant term, here it is plus c and it is minus 9.3 bar, तो हम लिखेंगे C is equal to minus 9.3 bar, and this is the answer. This is our standard form, means ax plus by plus c is equal to 0. Standard form में हम सारी terms को left hand side में लाते हैं, and right hand side should be only 0. जब we put the sign of equality, और 0 यहाँ पे यूज करते हैं, right? Similarly for the second part of it, see here, यहाँ पे देखिए second part ये है x, means we can write 1x minus 1 upon 5y minus 10 is equal to 0. देखिए ये रहा, ये 1x minus 1 upon 5y minus 10 is equal to 0. अगर y का कोएफिशिएंट नहीं है तो इसको आप 1 सपोज कर सकते हैं. Now comparing with, इसको कंपेयर करेंगे with the standard form. और स्टैंडर्ड फॉर्म है ax plus by plus c is equal to 0. To compare here, you will find that, see here, ये हमारा x है, this is x. The coefficient of x here is a, and here the coefficient of x is 1. So we can write a is equal to 1.
For the coefficient of b, here the coefficient of y is b, and here the coefficient of y is -1/5. So in place of b, we write -1/5. एंड फॉर द कांस्टेंट टर्म c, यहाँ पे देखिए कांस्टेंट टर्म c है और ये कांस्टेंट टर्म है -10. So in place of c, we can write -c. This is answer. This is our standard form, and this is the value of a, b, and c. Now, for the next part, that is part third. Third part here is say that is -2x plus 3y is equal to 6. Further, we can write -2x plus 3y minus 6 is equal to 0. Now, comparing with the standard form of linear equation in two variable, that is ax plus by plus c is equal to 0. See here, ये देखिए, the coefficient of x is a, and here the coefficient of x is -2. So we can write a is equal to -2. See, coefficient of y is plus b. Here, coefficient of y is +3. So in place of b, we can write 3. And see, here the constant term is c, and here constant term is -6, sorry. So c is equal to -6 answer. This is part third. Now we move on to the next part of it. अब हम next part, fourth part करेंगे. See here, fourth part देखिए. Fourth part is x is equal to 3y. फिर से लिख सकते हैं इसको x minus 3y is equal to 0. लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में 3 टर्म्स होते हैं, एक कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ y एंड कांस्टेंट टर्म. यहाँ पे इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, so we can write 1x minus 3y plus 0 is equal to 0. देखिए यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं था, तो we have taken here it is 0. And now comparing with comparing with the standard form, and that is ax plus by plus c is equal to 0. See, the coefficient of x is a here and coefficient of x is 1 here. Here coefficient is not given. If coefficient दे नहीं रखा हो, given नहीं है, तो उसके जगह हम 1 suppose करते हैं. देखिए, that is why now a is equal to 1. Coefficient of y here is plus b, and coefficient of y here is -3. So in place of b, we can write -3. b की जगह हम -3 लिख सकते हैं. In place of b, we can write -3. Similarly, the constant term here is c, and the constant term here is 0. So in place of c, means c can be written as 0. So this is the answer, the values of a, b, and c. Now we move on to the next part, that is part 5. Part 5, that is 2x is equal to -5y. Right? 5y को left side लाइए, so that is 2x plus 5y is equal to 0. Here इसमें constant term नहीं है, तो उसको 0 suppose करिए. 2x plus 5y plus 0 is equal to 0. And now comparing with
the standard form that is ax plus by plus c is equal to 0. So the value of a here will be, value of b will be, and value of c will be here. See, यहाँ पे देखिए, the coefficient of x is a, and here the coefficient of x is 2. So the value of a will be 2. Here the coefficient of y is b, and here the coefficient of y is 5 plus 5. So we can write here 5. And here the constant term is c, and here the constant term is 0. So we can write c is equal to 0. So this is the answer. A is equal to 2, b will be 5, and c will be 0. And next part here. Next part is part 6. Sixth part is 3x plus 2 is equal to, this is sixth part. Student, यहाँ पे y coefficient नहीं है, y is not there, so we can write here 3x plus 0 into y plus 2 is equal to 0. क्योंकि जब 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है, then it becomes 1. 0 into y is equal to 0. And now compare with the standard form, and standard form is ax plus by plus c is equal to 0. So देखिए, here coefficient of x is a, and here coefficient of x is 3. So we can write a is equal to 3. Coefficient of y is b, here coefficient of y is 0. So we can write b is equal to 0. And here constant term is c, and here constant term is plus 2. So in place of c, we can write 2, and this is the answer. A is 3, b is 0, and c is 2. This is the answer of this sixth part. And now the next part, that is part 7. Seventh part is y minus 2 is equal to 0. This is seventh part. यहाँ पे x का कोएफिशिएंट नहीं है, वेरिएबल x नहीं है, तो वी कैन राइट हियर 0 into x plus 1 into y minus 2 is equal to 0. Student, we can write y is equal to 1 into y. We can write x is equal to 1 into x. We can write 0 is equal to 0 into x. We can write 0 is equal to 0 into y. क्योंकि किसी भी नंबर से 0 मल्टीप्लाई हो जाता है, then it becomes equal to 0. Now compare करें स्टैंडर्ड फॉर्म से, comparing with the standard form, and standard form is ax plus by plus c is equal to 0. What is a? A will be 0, because see, coefficient of x is a, coefficient of x is 0. Coefficient of y is b here, and here coefficient of y is 1. So in place of b, we can write 1. And constant term is c, that is minus 2, and this is answer of this part 7. And now 8th part. This is 8th part. 5 is equal to 2x. देखिए, or we can write 2x is equal to 5. Left hand side is equal to right hand side. See, देखिए, left hand side is equal to right hand side. Oh, it means right hand side is also equal to left hand side. So we can write 2x is equal to 5. यहाँ पे y वेरिएबल नहीं है, so we can write 2x plus 0 into y, that is 5. लेकिन ये अभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हम इस 5 को लेफ्ट में ले जाना होगा. सो वी कैन राइट 2x plus 0 into y minus 5 is equal to 0. Now comparing
with the standard form, that is ax plus by plus c is equal to 0. We have the value of a here. See the coefficient of x, that is a, so that is 2. So a is equal to 2, b is equal to 0, and c is equal to, the constant term is -5, and this is the answer of this 8th part of this question. Now we move on to the third question. देखिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. यहाँ पे देखिए क्या है. This is exercise now, exercise 4.2, question number 1. Which of one of the following option is true and why? कौन सा ऑप्शन ठीक है? Y is equal to 3x plus 5. Student, y is equal to 3x plus 5 ये linear equation in two variable है. And linear equation in two variable has infinitely many solutions. क्योंकि आपने देखा होगा sometimes we get 4 solutions, 5 solutions, 10 solutions, 2 solutions. So the third part is correct, and the reason is, what is the reason? A linear equation in two variables has infinitely many solutions. This is the reason, and this is answer also. Now next question number 2 is write 4 solutions for each of the following equation. क्योंकि हमें पता है this is a linear equation in two variable, 2x plus y is equal to 7. Second part is also linear equation in two variable, and third is also linear equation in two variable, क्योंकि यहाँ पे 2 variables है, and we know that a linear equation in two variable has infinitely many solution. Linear equation in two variable के endless solution होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे 5 solution find out करने हैं. देखिएगा. So for the first part, we write here the first part. Okay, this is the first part. First part is this. I'm writing here. So देखिए, we can write 2x plus y is equal to 7. We can write here late for the first part here. That is 2x plus y is equal to 7. We can write y is equal to 7 minus 2x. इसको कहते हैं writing y in term of x. Y in term of x का मीनिंग ये हुआ कि y को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और सारे टर्म्स को राइट हैंड साइड पे हम लिख देंगे. नाउ लेट देखिए, अब सपोज करिए x इज इक्वल टू 0. सो इसमें हमें x इज इक्वल टू 0 हमें सपोज किया, वी पुट x इज इक्वल टू 0. Now what is y? Y is 7 minus 2 into 0. देखिए ये जो x है उसकी जगह हमने 0 पुट किया. y is equal to y, 7 is equal to 7 minus 2 into x, that is 0, and that is 7 minus 0, that is 7, because minus 2 into 0, that is 0. So अगर x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 7 हुआ. ये इसका वन सॉल्यूशन हुआ. See the second solution. Later, late कोई भी आप रैंडम कोई रियल नंबर्स आप सेलेक्ट कर सकते हो. लेट x is equal to 1. So y is equal to 7 minus 2 into 1, that is 7 minus 2, that is 5. So when x is equal to 1, you can write y is equal to 5. Third, late x is equal to 2. So we can write here y is equal to 7 minus 2 into 2. Y is equal to 7 minus 4. So y is equal to 3. तो जब x का वैल्यू 2 होगा तो y का वैल्यू 3 होगा. तो राइट हियर x is 2 and y is 3. लेकिन ये तो हमें अभी 3 सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए, हमें एक वन मोर सॉल्यूशन हमें जरूरत पड़ेगी. इसको देखिएगा. So for one more solutions,
यहाँ पे आई हैव टू रिमूव इट, यहाँ से मैं रिमूव करना पड़ेगा इसको। सी लेट कोई भी आप एक वैल्यू सपोज कर सकते हैं, लेट x इज इक्वल टू 7, so y is equal to 7 minus 2 into 7, y is equal to 7 minus 14, y is equal to 7. So if x is 7, y is minus 7. So we can say the solutions are, one solution is 0,7, other is 1,5, third is 2,3, and fourth is 7,7. Thus we can find out infinitely many solution. इस प्रकार हम endless solution find out कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि we have to find out only 4 solutions. So हमने ये 4 solution find out किए हैं। स्टूडेंट पहले हम x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, फिर पहला x का वैल्यू और फिर उसके बाद में y का वैल्यू हम लिखते हैं। So that's all for question, the first part, and now for second part. See, your second part is, say, your second part, that is pi x plus y is equal to 9. We can write y is equal to 9 minus pi x. y को लेफ्ट हैंड साइड रखा और 9 minus pi x को राइट हैंड साइड लिखा। लेट नाउ सपोज, now let x is equal to 1. So right here x is equal to 1. What will be y? y is equal to 9 minus pi into x. जहां भी x है उसकी जगह आप 1 पुट करें, that is 9 minus pi. So the value of y will be 9 minus pi. This is one solution. Let, इसी में let x is equal to 2. We can write here y is equal to 9 minus pi into 2. देखिए, that is 9 as it is, minus pi, in place of x you write here 2. So that is 9 minus 2 pi. जब x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू है 9 minus 2 pi. 9 minus 2 pi. Please don't put pi is equal to 22 by 7. 22 by 7 आपको पुट नहीं करना है, pi की जगह as it is pi ही लिखना है। ऐसे we can take so many values here. हम इस तरह से हम खूब सारी वैल्यू ले सकते हैं। See here. The third is we have already have written y is equal to 9 minus pi x. Let x is equal to 3. x की कोई रैंडम वैल्यू, कोई भी रियल वैल्यू हम ले सकते हैं, 1, 0, नेगेटिव, पॉजिटिव, इन फ्रैक्शन, यस, रेशनल और इरेशनल। सो y is equal to 9 minus pi into 3. So y is equal to 9 minus 3 pi. So if x is equal to 3, the value of y will be 9 minus 3 pi. Similarly, when the value of x is 4, the value of y will be 9 minus 4 pi. So solutions are, first one solution is 1,9 minus pi. Second solution we can say 2,9 minus 2 pi. Third solution is 3,9 minus 3 pi. And fourth solution you can take here. Fourth solution you can write 4,9 minus 4 pi. ये we can find out infinitely many solution, endless solution हम find out कर सकते हैं, right? Okay. Now we come to the third part of it. Okay, ये third part है हमारा, ये रहा. This is third part. That is x is equal to 4y. Yeah, okay. So you can take here, let y is equal to 0. जरूर नहीं कि x in term of, ये हमने लिखा है x in terms of y. x in terms of y का मीनिंग ये हुआ कि x लेफ्ट हैंड साइड में है और all the other terms are in right hand of the equality side of sign of equality है, right side.
इक्वल साइन के राइट हैंड साइड में सारे टर्म्स है, लेफ्ट हैंड साइड में केवल x है और जो रिमेनिंग टर्म्स है वो इक्वल साइन के राइट हैंड साइड में है. सो दिस इज सेड टू बी राइटिंग x इन टर्म ऑफ y. सो सपोज किया y इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 4, y की जगह 0 पुट करें तो x इज इक्वल टू 0. सो व्हेन y इज इक्वल टू 0, x इज आल्सो 0. सेकंडली y is equal to 1. So x is equal to 4. In place of y आप 1 लिखें. यहाँ पे देखिए x is equal to 4 into y. y की जगह हमने 1 लिखा. That is y. So the value of x is 4. So if x is 4, y is 1. Thirdly, x is 2. Sorry, y is 2. So we can write x is equal to 4 into 2. So x is 8. तो अगर y का वैल्यू 2 है तो x का yes, y का वैल्यू 2 है, the value of x will be 8. Yes, you can take any number. Let y is equal to -1. So x is equal to 4 into -1. X is equal to -4. So if y is -1, the value of x will be -4. So 4 solutions are 0, 0, 4, 1, 8, 2 and -4, -1. स्टूडेंट ये जरूरी नहीं कि इसका जो आंसर है आपकी आंसर शीट से मैच करें, बिकॉज आउट ऑफ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस वी हैव टेकन ओनली 4 सॉल्यूशन. एंडलेस सॉल्यूशन में हमने केवल 4 सॉल्यूशंस यहाँ पे फाइंड आउट किए हैं. सो बुक का सॉल्यूशन और यहाँ आपका सॉल्यूशन डिफर कर सकता है. दैट इज नॉट द प्रॉब्लम. एंड नाउ देखिए क्वेश्चन नंबर 3. Check whether the following are solutions of the equation x minus 2y is equal to 4 and which are not. ये जो लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल में, इसमें कौन इसका सॉल्यूशन है और कौन सा इसका सॉल्यूशन नहीं है. देखिए फर्स्ट वी राइट फर्स्ट ले 0,2 भी चेक करते हैं यहाँ पे और x इज इक्वल टू 0 and y is equal to 2. Left hand side of our equation is x minus 2y. ये x minus 2y देखिए, इसका लेफ्ट हैंड साइड में पुट किया. पुट करेंगे तो व्हाट इज x? x इज इक्वल टू 0 minus 2. व्हाट इज y? 2. So 0 minus 4 that is -4 and this is not equal to राइट हैंड साइड. देखिए राइट हैंड साइड +4 है. अगर यहाँ पे हम x की जगह इस इक्वेशन में 0 और y की जगह 2 रिप्लेस करते हैं तो इसका जो सॉल्यूशन आता है, इसका सिंप्लीफिकेशन आता है -4 है, जबकि आना चाहिए था हमारे पास +4. सो हम कहेंगे दैट देयरफॉर 0,2 इज नॉट ए, इसका 0,2 सॉल्यूशन नहीं है. नाउ वी चेक द सेकंड पार्ट ऑफ इट. Let this second part, let x is equal to 0 and y is equal to 2. Suppose कि ये इसका solution है, इसको check करेंगे. Then we put these values in left hand side, x minus 2y. This is x minus 2y, left hand side of the equation. In place of x 0 put करिए, -2 put करिए एंड -2 और y की जगह आप 0 पुट करिए तो देखिए 2 minus 0 that is 2. That is also not equal to right hand side because right hand side is 4. राइट हैंड साइड, अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होते तो हम कहते दैट इज द सॉल्यूशन. लेकिन यहाँ पे when we replace the value of x is equal to means 2 and y is equal to 0, left hand side is not equal to right hand side. तो हम कहेंगे therefore 2,0 is also not a solution. And now we check the third part of it. इसको मैं रिमूव कर देता हूं, फर्स्ट और सेकंड पार्ट को देखिए. Now third part is that is this is
4, 0. So put x is equal to 4 and y is equal to 0. Left hand side is x minus 2i. Left hand side of this equation, that is x minus 2i. x की जगह आप 4 पुट करें और y की जगह आप 0 पुट करें. That is 4 minus 0. That is 4. Yes. And this is equal to right hand side. देखिए right hand side 4 ही है. So we can say therefore yes, 4, 0 is a solution of x minus 2i is equal to 4. ये इसका सोल्यूशन है. अब हमें फोर्थ और फिफ्थ पार्ट को भी चेक करना है, क्या इसकी सोल्यूशन है. देखिए now we check fourth part means root 2 and 4 root 2. So put x is equal to square root 2 and y is equal to 4 into square root of 2. Then left hand side x minus 2i. x की जगह रूट 2 पुट करें और y की जगह 4 रूट 2 पुट करें. That is root 2 minus 8 root 2, root 2 common, 1 minus 8, that is minus 7 root 2. Minus 8 root 2 plus root 2, that is minus 7 root 2, और this is not equal to right hand side because right hand side हमारा 4 है. So हम कहेंगे therefore root 2 comma 4 root 2 is not a. आपको केवल इतना चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू रिप्लेस करने से अगर राइट हैंड साइड वैल्यू आ जाती है तो वो सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज दैट विल नॉट बी सॉल्यूशन, नॉट विल बी सॉल्यूशन. तो यहाँ पे x की जगह रूट 2 और y की जगह 4 रूट रिप्लेस करने से राइट हैंड साइड नहीं आता है. दैट इज minus 7 root 2. राइट हैंड साइड इज 4. सो दिस इज नॉट द solution. And now fifth part, x1 y1. So put x is equal to 1 and y is equal to 1. Left hand side में replace करके देखेंगे and left hand side of the equation is x minus 2y. Put x is 1 and 2, that is 1, 1 minus 2, that is minus 1. And that is not equal to RHS. देखिए ये इक्वल किया और कट किया, इसका मीनिंग होता है not equal to. So therefore 1, 1 is not a solution of the linear equation, that is x minus 2y is equal to 4, and that is the answer. So यहाँ पे हम चेक करते हैं कि जो हमारा थर्ड पार्ट है केवल यही 4,0 ही हमारा एक सॉल्यूशन है. We move on to the next question number 4. देखिए, find the value of k if x is equal to 2 and y is equal to 1 is the solution of the equation 2x plus 3y is equal to k. यहाँ पे क्या पुट करना है हमें? So put x is equal to 2 and y is equal to 1 in the equation 2x plus 3y is equal to k. 2 in place of x you put 2, 3 in place of y you put 1, that is k. So 4 plus 3 is k. So 7 is equal to k. Therefore, the value of k is 7. Answer. So that's all, student. Thank you.